Chalo. So welcome everyone. Welcome to Sadhava classes. You are in standard 6 and this is the textbook of English Balabharati of standard 6. English medium का textbook है ये. Okay, so we'll start your English subject today. Now, if you see your textbook, this is your textbook actually. If you see your textbook and content, so don't give up. The first poem is don't give up. First poem is don't give up. I think we have taken this poem, but still it is a revision for us. So chalo. So don't give up. So what do you mean by don't give up? Okay, देखो कभी भी हमें हारना नाही आहे. ओके, आपल्याला कधी हारायचं नाहीये. कुठल्या गोष्टीला आपल्या संकटांना तोंड द्यायचं आहे. एखादी गोष्ट डोंट गिव्ह अप म्हणजे आपण एखाद्या गोष्ट मध्ये सोडून जायचं नाही, हार मानायची नाहीये लगेच. एखाद्या गोष्ट लगेच हार मानायची नाहीये. So don't give up. If you have tried and have not won, never stop for trying. Okay, sometimes you try a thing. Okay, you try a thing and you may or may not win. Okay, you have not won, you haven't won, but you are not supposed to stop for crying. रोने का नहीं है, रडायचं नाहीये, थांबायचं नाहीये. All is that is great and good is done just by patient trying. So whatever happens in our life, it requires patient. It requires patient trying. Okay. So you try things slowly, slowly, and be patient, and you will you'll do something great and something good. You'll do something great and you'll do something good. समझा? तो हमको रुकना नहीं है. You are not supposed to stop. Though young birds in flying fall. Okay, देखो small birds होते हैं, when they fly they fall. When they fly they fall. Still their wings grow stronger. But धीरे धीरे क्या होता है कि their wings grow stronger. उनके जो wings होते हैं वो stronger बनते हैं, and up the next time they can keep up a little longer. देखो ना, तुम्ही पण लहान होते, तुम्हाला लगेच सायकल चालवता आली का? नाही. तुम छोटे थे, तुमको सायकल फटक से एक ही झटके में आया क्या? नहीं. सो यू ट्राइड. धीरे धीरे तुम साइकिल चलाना शुरू हो गया. तुम्हें जब चलना भी नहीं आता था तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे हाथ पकड़ के चला देते तुमको. सो यू ट्राइड. धीरे धीरे आप चल रहे. एंड नाउ अगर आप यू आर इन स्टैंडर्ड 6, सो आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चे यू आर एबल टू राइड द सायकल व्हेरी वेल. ठीक है, तो तुम्हाला सायकल व्यवस्थित चालवता येते. नाउ नेक्स्ट थिंग्स. Though the sturdy oak has been many, though the sturdy oak is a tree, has known many a blast that bowed her, she has risen again and grown loftier and prouder. If by easy work you beat, see, if by easy work you beat, who the more will prize you, gaining victory from defeat. That is the test that tries you. Okay, see, easy things can anyone do. easy things जो होता है ना, and easy work और easy work can anyone do. अब देखो आपके मोबाइल में गेम होता है. So when you start any game, so जो आपसे सबसे जो पहला स्टेप रहता है वो इजी स्टेप रहता है. So if you इजी स्टेप सब जन पार करते हैं, बट इफ यू गो अहेड इन दैट गेम या फिर कुछ भी आप देखो पढ़ाई में, पहले आप स्टैंडर्ड फर्स्ट में थे तो स्टैंडर्ड फर्स्ट का पढ़ाई इजी था, बट नाउ यू आर इन स्टैंडर्ड 6, सो द थिंग्स आर गोइंग हार्डर. ठीक है, एंड गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट. जो हार से जीतता है, देखो हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं. दैट इज द जोक. बट व्हेन यू गेन विक्ट्री फ्रॉम द डिफीट, दैट इज द टेस्ट दैट ट्राइज यू. ओके, ये तुम्हारी टेस्ट लेती है, ही तुमची परीक्षा असते. ओके, व्हेन यू गेट द विक्ट्री फ्रॉम द डिफीट, तो लोग बोलते नहीं यार, यस दैट गाइज और दैट गर्ल कैन डू एनीथिंग. त्या मुलगा किंवा ती मुलगी काही पण करू शकते. राइट. सो दिस वॉज युअर पोएम. Give. What do you mean by give up here? It means lose heart and stop trying. अपन म्हणतो ना यार, जाऊ दे यार, मला काही जमत नहीं, मुझे नहीं जमेगा, मैं छोड़ देता हूँ. ओके, गिव अप छोड़ दे रहा हूँ, मुझे नहीं जमेगा. बहुत बार ऐसा होता है, कुछ सम अगर हार्ड होता है मैथ्स का तो हम बोलते हैं सर हमको नहीं जमेगा, मैं छोड़ देता हूँ. बट इट इज नॉट लाइक दैट. यू शुड ट्राई. साइकिल चलाना हो या फिर कुछ खेलना हो, आप आज जो भी कर रहे हो, यू आर नॉट और यू हैवंट लर्नड
एवरीथिंग इन अ डे, एक दिन में सब साइकिल चलाना सीख गए क्या? नहीं, ऐसे सबको जो कसरत करते हैं, डांस करते हैं, ये सारे बच्चे, या फिर ये बच्चा खेल रहा है, चेस खेल रहा है, सो इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स टाइम. Then what is sturdy? Sturdy means strong. What is sturdy? Sturdy means strong. Has known many a blast. Has known many a blast. That means has survived many blows of stormy winds. अरे ये तो बताना भूल गया मैं. Stormy winds. So this one. You can see that there is a oak tree. Okay, the oak tree has many blasts that bowed her. देखो एक पेड़ होता है बहुत सा. देखो suppose this is a tree. Okay, and there are many things that are, देखो तो suppose यहाँ वादळ आलं, वारं आलं. Okay, there is a storm or something that it they try to bow मतलब त्याला झाडाला पाडायला प्रयत्न करतात, झाडाला पाडायचा प्रयत्न करतात. They try to bow the tree, they try to break the tree, but ऐसा होता है क्या? नहीं, द जो ट्री होता है, द ट्री राइजेस अगेन, इट राइजेस अगेन एंड ग्रोज लॉफ्टियर एंड प्राउडर. वो ट्री बड़ा बड़ा होते ही रहता है. छोटे छोटे ट्रीज नहीं बोल रहा, बड़े ट्रीज बोल रहा हूँ मैं. इवन देर आर स्मॉल ट्रीज ऑल्सो, दे ऑल्सो डू नॉट गेट uprooted in the rain or in the wind, in the storm. So what is loftier? Loftier means taller and stronger. You beat means मतलब क्या होता है? You are here, you win. You beat मतलब you win. You beat matlab you win. Okay, so this is your poem. Just a minute. So who is the greatest? ये हम आज नहीं लेने वाले. Who is the greatest? It will require some time. बहुत easy actually है वो भी. Now what we'll do? See, yes, just a minute. Yes, Raj, read the poem. Okay, sir. Okay, सबको poem read करने वाला हूँ मैं. Okay, Raj, read the poem first. If you be tried If you have, सुन मेरी बात सुन बेटा. If you have, उसको कैसे रीड करेंगे? If you have tried. Okay, start. if you have tried and have not won, never stop for crying. All that's great and good is done just by patient trying. Growth, young birds in flying fall, still their wings growing stronger, and the next time they can keep up a little longer. उसको दो, THOUGH, दो. Though the sturdy oak has known. The sturdy oak has known many a blast that have bow here. She has risen again and grown loftier and prouder. Okay. If by the bird you beat, who the mower will prize you? Can you keep from that the best that prize you? हो गया? चलो, good. Next, Shalom, read. Shalom, are you there? चलो, start reading, Shalom. Shalom, start. सर आवाज नाही. Shalom. Hello. हाँ. Hello. Yes, start. Hello, sir. Yes, start. Hello. Start, Shalom. सर आवाज नाही. Stop for cry. सर मी वाचतोय. कोण वाचतोय? If you are. हाँ. सर मी. हाँ, yes, read, Shalom. ऐकायला येते सर. हाँ, Shalom, I can hear you. If you were tired and have not would never stop for crying. All that great and good is done just by. सर हे काय बायच्या पुढं? एक सेकंड. Sir. Patient trying. Patient trying. Thought young birds in flying fall, still their wings grow stronger, and the next time they can. सर आवाज नाही. अरे बाळांनो, 2 मिनिटं थांबा जरा तुम्ही. तुझा आवाज काय येत नाहीये प्रथमेश वांद्रे? परत ट्राय कर. The sturdy oak has known many a blast that blowed her
She has risen again and risen again and Lucifer grown. risen again and grown. Sorry, एक सेकंड, काय झालं? glorified ग्रोन कुठे? लॉफ्टियर अँड प्राऊडर. if you beat who the काय झालं? कॅन्ट यू हिअर मी? एनिवेज चल.